Welcome to all of you class 8 student. Today we can start your science class, crop production and management. You know that in the last video we can discuss about the irrigation. Irrigation means watering to crop or plants. पौधों को पानी देना, सिंचाई करना. It is called as the irrigation. So, in the past time, we can irrigate all the crops by the moat, rahat, dhekli, etc. We can discuss all these in the last video. Today, we can discuss two methods for the irrigation by canal और कैनाल सिस्टम मीन्स नहरों के द्वारा और ट्यूबवेल के द्वारा. जैसे देखिए आपने सब देखा होगा कि जैसे गांव में जाइए या तो मतलब कि है कहीं जाइए, कहीं पर यात्रा आप करते हो, देखते होंगे कि नहरें बनी होती हैं, ठीक है. और मतलब कि है इनका यूज क्या होता है, जब मतलब कि पानी इसमें भेजा जाता है तो इनसे क्या कि खेत की सिंचाई की जाती है. और नेक्स्ट आपका मेथड है ट्यूबवेल. ट्यूबवेल इज द वेरी फेमस फॉर द irrigation nowadays, submersible and also it is the used for the different electric motors to pull the water from the depth, and this water is the used in the irrigation. But due to the uses of the tubewell, we can also irrigate the crop by the sprinkle system and drip system. What is the sprinkle system and what is the drip system? What is the uses of this? This process is the used in the summer season. It is the very beneficial in the summer season. In this process, have the pipeline, and pipelines contain a sprinkle like structure. It is contain a ball. When the ball is the rotate, then it remove the water in all the direction in the smallest particle. So due to this process, all the leaves of the crops contain the moisture in the summer season, so it is not dry. और एक मतलब कि है उसमें फसलों में क्या कि नमी पत्तियों में सब बनी रहती है और क्या कि पत्तियां गर्मी के मौसम में सूखती नहीं. और नेक्स्ट आपका है ड्रिप मेथड. ड्रिप, this method is nowadays it is used in the greenhouse. But you know what is the greenhouse? सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि आपको ग्रीन हाउस के बारे में बताते हैं. ग्रीन हाउस, you know, nowadays or the past time, population is the increase and pollution increase time to time. There are the many harmful gases increase in the atmosphere. So these gases are the destroy to the fauna and flora. Fauna and flora means होता है means smallest plant. So all these plants grow in a green hut like structure is the prepared. This structure absorb those light which is the
beneficial for the fauna and flora. So it is called as the greenhouse. In the greenhouse, all the plant is irrigated due to the drip method. For example, in the greenhouse have yet tubal pipe is the settled in all the part. It is the contain smallest pore. Due to this pore, the water is the come out the slowly, and all the fauna and flora are irrigated. This process is called as the drip method. So in the last video and today we can discuss the irrigation, but when we can irrigated the crop, there are the many microorganisms, many types of the weeds are grow. मतलब कि जब हम फसल को सींचते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें विभिन्न प्रकार की घासें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कीड़े, कीट पतंगे सभी मतलब कि आ जाते हैं. सो ये इनसे हम क्या कि हम उसको प्रोटेक्ट करते हैं. सो वी कैन टेक इन ए पॉइंट्स प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप. क्रॉप को हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? सबसे पहले वी कैन डिस्कस अबाउट द बीड्स. बीड्स क्या होते हैं? बीड्स क्या कि सब ऐसी सब प्लांट्स हैं, घासें हैं जो कि मतलब कि खेत में है उगाती. इट इज द ग्रो इन द फील्ड एंड एब्जॉर्ब much amount of the humus from the field. Due to this, the original crop is the not grow time to time. So there are the many pesticides which are the spray in the field. So weeds are the destroy. The destroying of the wheat is called as the budding, and it is also destroyed by uprooting by the uses the harrow, जिसको क्या कि हिंदी में है खुरपा या खुरपी कहते हैं. तो उसका यूज करके भी हम क्या किसको निकाल सकते हैं. अब देखिए, you know that there are the many microorganisms which are attacked on the crop and destroy the crop time to time. So due to this, we can use different and insecticide and pesticide. It is a spray on the field. So thus we can protect our crop. We can discuss this topic, harvesting. Harvesting is the process when the crop is the ripe, then we can cut this. मतलब कि जब क्या कि फसलें पक जाती हैं तो उसको काटने का जो प्रोसेस उसको हम क्या कि हार्वेस्टिंग कहते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड एज द थ्रेस्टिंग. इसको हम थ्रेस्टिंग भी कहते हैं. एंड ए मशीन is the used for the harvesting is called as the thresher. It is also called as the thresher. थ्रेसर क्या कि मतलब कि है ये एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा हम क्या कि फसलों को काट करके उसमें का उसके जो तो ग्रेन्स है हम उसको निकालते हैं. And there are the many types of the another threshing machine nowadays are used.
in the some places all the ripened crop is the cut by the human means to use the plows, harrows, etc. And the last topic is the story. अब देखिए, जब मतलब कि फसलें क्या है, कट जाती हैं तो हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन स्टोरिंग से मतलब कि पहले आप जानते हैं कि ऑल द न्यू क्रॉप इज द कंटेन द मॉइस्चर। जितनी भी मतलब कि है न्यू क्रॉप होती है उनमें आप जानते हैं कि मॉइस्चर होता है। if you are stored, then after some time it is the eaten by the some insect or it is the rotten। यदि आप इसको मतलब कि है मॉइस्चर सहित रख देते हैं तो या तो कोई न कोई इसको इंसेक्ट क्या है खा जाएंगे, या तो एक की फसलें क्या होती सड़ जाती हैं। सो इसको स्टोर करने से पहले सबसे हम पहले सब क्या करते हैं कि इसको धूप में सुखा देते हैं। दैट इज द we can drying all the grains in the presence of the sunlight, then it is the remove their moisture, then we can store it in the warm and suitable places. So in this lesson we can discuss about the crop, how we can growing, preparation of the soil, protection of the seeds, choice of the seeds, fertilization, etc. So we can discuss the next topic in the next video. Thank you.